So the passage reads, a widespread belief holds that early human societies were matriarchal. Matriarchal means power is stemming from maternal side, okay, or gender neutral and more peaceful. So matriarchal societies are believed to be more peaceful until patriarchy emerged and brought violence and oppression. So patriarchy के साथ violence and oppression आया. This notion of matriarchy and patriarchy as polar opposites. So why so polar opposites? Because matriarchy is believed to be peaceful, while patriarchy is believed to be violent and oppressive, with a switch having been thrown between them. What does this mean? Means a sudden shift, है ना, कि there was matriarchy and then suddenly patriarchy came. So so when we say something, when we turn off the switch on or off, so there is a sudden change, and that is what's been stated here. What's seeded in the 19th century by Marxist theory. So Marxist theory का ये कहना था, है ना, कि there was a shift from matriarchy to patriarchy. फ्रॉम देयर इट स्प्रेड टू पब्लिक कॉन्शियसनेस. सो वहाँ से ये बात लोगों के दिमाग में आ गई. एंथ्रोपोलॉजिस्ट, हु आर एंथ्रोपोलॉजिस्ट? People or social scientists who study society and its structures, how it gets dismantled, how it progresses over time, and all those things around societies. Okay, so anthropologists tended to be more skeptical. So anthropologists was not buying into this Marxist theory. They were skeptical, they were doubting कि ऐसा ही था या कुछ और था. They saw plenty of diversity in gender relations across human societies. उनके अनुसार ऐसा नहीं था कि देर वॉज ए सडन चेंज, है ना, कि सिर्फ पहले मेट्रियार्की थी और देन पेट्रियार्की केम. नहीं, उनके अनुसार देर वॉज डाइवर्सिटी इन जेंडर रिलेशंस अक्रॉस ह्यूमन सोसाइटीज, बोथ मॉडर्न एंड हिस्टोरिकल, एंड सम ऑफ देम सस्पेक्टेड दैट डाइवर्सिटी वॉज द रूल इन प्री हिस्ट्री टू. मतलब अर्ली हिस्ट्री में भी डाइवर्सिटी ही रही होगी, मतलब दोनों रहा होगा, है ना, मेट्रियार्की भी एंड पेट्रियार्की भी. मतलब चीज़ें इतनी सिंपल नहीं थी. थिंग्स वेर मोर लेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स. ओके, द मार्क्सिस्ट आइडिया वॉज दैट द ह्यूमन्स वेर इगैलिटेरियन. इगैलिटेरियन मीन्स दैट पीपल हैड इक्वल राइट्स, इक्वल रिसोर्सेज, है ना. सो काइंड ऑफ इक्वल सोसाइटीज़ को इगैलिटेरियन सोसाइटी हम कहते हैं. Until agriculture spread out of the Middle East about 10,000 years ago. तो मार्क्सिस्ट आइडिया के अनुसार एग्रीकल्चर के पहले सोसाइटीज वेयर इगैलिटेरियन विथ मोर सेडेंट्री लाइफ स्टाइल. वाई सेडेंट्री? बिकॉज अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, इफ़ यू आर डूइंग एग्रीकल्चर, देन यू हैव टू have a still lifestyle. You have to stay at a place. So that is what is being referred as sedentary lifestyle, still lifestyle. And accumulation of wealth that farming brought came the need to defend that wealth. So if you are doing farming, you will produce crops, उसके वजह से you will accumulate wealth, and उसके साथ there came the need to defend that wealth and to fix rules for its inheritance. Of course, if you have the wealth, then you will have to fix rules ki who will control this in the successive generations. Okay? And as populations grew, men monopolized the elites that formed to coordinate these things. And population जैसे जैसे बढ़ा, men का इसके coordination में wealth accumulation and उसके इनहेरिटेंस के रूल्स जिन स्ट्रक्चर के अराउंड बनाया जा रहा था, उसमें मेन का मोनोपली हो गया. वाई? इन पार्ट बिकॉज दे वेर बेटर एट वॉरफेयर. ऑफ कोर्स वी नो दैट मेन आर at least physically in wars and all, they are superior to females. And earlier सब कुछ war से ही decide होता था mostly, all those things. So and men were better, so wealth gravitated to the male line because they were engaging in those things na. The male were engaging in warfare, and that's why they got the chance to participate in uh, the structure which decided कि वेल्थ एक्यूमुलेशन के जो रूल्स होंगे
वो क्या होंगे, एंड men got the opportunity to form those rules. Okay, and male kin were also more likely to stay put. Male kin मतलब male side, मतलब kinship होता है lineage है ना, family lineage. Okay, were also more likely to stay put, मतलब साथ में रहना, विद देयर फीमेल मेट्स मूविंग टू लिव विद देम, है ना. तो मेल साइड के जो लोग थे वो साथ रह रहे थे, बट फीमेल मेट्स जो फीमेल पार्टनर्स थे उन्हें मूव करना पड़ता था अपने मेल पार्टनर्स के साथ रहने के लिए. फीमेल ऑपरेशन वाज ऑफन अ बाई प्रोडक्ट ऑफ दी चेंजेस, एंड फीमेल ऑपरेशन इन चेंजेस का बाई प्रोडक्ट था. सो मार्क्सिस्ट आइडिया ये है कि अर्लियर सोसाइटीज इगैलिटेरियन था, देन एग्रीकल्चर केम, men got the opportunity to monopolize things, एंड इसके वजह से फीमेल ऑपरेशन आया. वाइल एंथ्रोपोलॉजिस्ट का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं था, देयर वॉज डाइवर्सिटी अक्रॉस जेंडर स्ट्रक्चर ऑल अलोंग द ह्यूमन हिस्ट्री. ठीक है. एन ऑल्टरनेटिव थ्योरी पुट बाई द आर्कियोलॉजिस्ट Marisa Gimbutas in 1960s was that women-centered societies dominated for longer in Europe. Again, there is a alternative theory जो कि मार्क्सिस्ट थ्योरी से एग्री नहीं कर रहा है. क्या कि जो वुमेन सेंटर्ड सोसाइटीज़ थे वो 5000 साल पहले तक भी यूरोप में डोमिनेट कर रहे थे. ओके, व्हेन दे वेयर टॉपल्ड बाय इनकमिंग पेट्रियार्कल नोमैड्स फ्रॉम द स्टीप. और उस वक्त उन्हें पेट्रियार्कल नोमैड्स मतलब घुमक्कड़, पीपल हु यूज टू रोम हंट एंड लिव, उनको नोमैड्स बोलते हैं. सो एंड दे वेर पेट्रियार्कल और दे टॉपल्ड मतलब दे रिप्लेस्ड सच स्ट्रक्चर्स. ओके. मेट्रिलिनियलिटी मतलब यहाँ पे कि फीमेल लाइन में वेल्थ एंड पावर स्ट्रक्चर पास डाउन हो रहा है, एंड मेट्रिलोकैलिटी जहाँ पे फीमेल साइड के लोग साथ रह रहे हैं. ठीक है. ऑफन गो टुगेदर and both are associated with higher female status and influence. Of course, if a society is matrilineal जहाँ पे कि wealth पास डाउन हो रहा है फीमेल लीनियज में, ऑफ कोर्स वहाँ पे फीमेल को ज़्यादा स्टेटस हायर होगा एंड उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा. बट व्हाट्स दैट बट दो दे enjoy higher status, women in matrilineal societies do not necessarily make decisions. स्टिल मतलब कि उनके पास हायर स्टेटस तो था, बट दे वेर स्टिल नॉट मेकिंग डिसीजंस. दैट जनरली रिमेन्स द प्रिजर्व ऑफ मेन, जस्ट ऑफ वुमेन्स ब्रदर्स रादर देन देयर हस्बैंड्स. वो तब भी दैट स्टेड विथ मेन, that decision making power. But there was a difference that in matrilineal societies women's brothers had more decision power than their husbands. And since ancient DNA and isotopes मतलब जो DNA वगैरह से हम मैपिंग करते हैं, है ना, कैन नॉट टेल यू मच अबाउट फीमेल एजेंसी. एजेंसी मतलब पावर. एंड DNA मैपिंग से यू कैन नॉट रियली गेट टू नो कि पावर स्ट्रक्चर क्या था, बिकॉज पावर स्ट्रक्चर इज अब्स्ट्रैक्ट, है ना. दैट इज नॉट ईजी टू बी डिकोडेड थ्रू DNA मैपिंग. क्या जेंडर पावर रिलेशंस इन प्री हिस्ट्री रिमेन्स अ मैटर ऑफ डिबेट. ऑफकोर्स DNA मैपिंग से इट इज़ डिफ़िकल्ट टू नो कि जो पावर स्ट्रक्चर था वो क्या था, है ना. एंड इसके वजह से जो जेंडर पावर रिलेशन है वो प्री हिस्ट्री में वो एक मैटर ऑफ डिबेट है. इनफैक्ट दिस लाइन ऑफ वर्क हैज़ फोर्स्ड रिसर्चर्स टू आस्क देमसेल्व्स व्हाट दे मीन बाय पावर, है ना. सिंस देर इज अ डिबेट, द रिसर्चर्स आर नॉट श्योर कि व्हाट एक्चुअली पावर इज, व्हाट दे डू मीन बाय पावर. इफ द फीमेल consort of a male ruler influenced his entourage through patronage and back channels. मतलब अगर हिस्ट्री में ऐसा कभी रहा हो कि जो फीमेल कंसोर्ट मतलब फीमेल साइड ऑफ अ मेल रूलर इन्फ्लुएंस्ड हिज एंटोराज मतलब हिज डिसीजंस थ्रू पैट्रोनेज एंड बैक चैनल्स, मतलब फीमेल का अगर इन्फ्लुएंस रहा हो and his own policies through counseling, was she any less powerful than him?
सो देर इज अ डिबेट है ना कि वी आर नॉट रियली श्योर कि जो पावर स्ट्रक्चर्स था वो कैसा था, बिकॉज जो करेंट डीएनए एंड आइसोटोप्स मैपिंग्स हैं, सीक्वेंसिंग है, दे आर नॉट इनफ टू कंक्लूसिवली टेल कि एंशिएंट पावर स्ट्रक्चर कैसा था. ओके. In recent years, something else has become clear. What else has become clear? Although Marxist idea may have been broadly right in associating wealth with patrilineality. मतलब मार्क्सिस्ट आइडिया मे बी ब्रॉडली दे वर राइट इन एसोसिएटिंग वेल्थ विथ पेट्रिलिनियलिटी. मतलब किस वजह से वेल्थ में पेट्रियार्की आई. ओके. वेल्थ इनहेरिटेंस में पेट्रियार्की आई. अदर फैक्टर्स शेप्ड जेंडर रिलेशंस टू. बट मार्क्सिस्ट तो ये कह रहे कि नहीं, बस यही था, है ना, कि मैट्रियार्की एंडेड एंड पेट्रियार्की रोज. बट ऐसा नहीं है. अदर फैक्टर्स शेप्ड जेंडर रिलेशंस टू, सच एज हाउ अ सोसाइटी मेक्स अ लिविंग. मतलब एक सोसाइटी में क्या स्ट्रक्चर है वो अपना, हाउ दे आर मेकिंग देयर लिविंग्स, है ना. रिसेंटली मतलब हाउ डू दे लीव, ऑन व्हाट डू दे लीव, है ना, उनका सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा है, ये इन चीज़ों पे भी ये जेंडर रिलेशन डिपेंड करता है. कैसे? रिसेंटली चाइनीज एंड ब्रिटिश रिसर्चर्स रिपोर्टेड दैट ट्रेडिशनली मैट्रिलिनियल विलेजेस इन तिब्बत के जो ट्रेडिशनल मैट्रिलिनियल विलेज थे हैव बिकम मोर जेंडर न्यूट्रल over the last 70 years as they move from an एग्रीकल्चर इकॉनमी टू अ मार्केट ओरिएंटेड वन. तो जो तिब्बत में जो पहले मेट्रिलिनियल विलेज थे वो अब जेंडर न्यूट्रल हो रहे हैं. क्यों? क्योंकि उन पहले वो एग्रीकल्चर इकॉनमी था, अब वो मार्केट ओरिएंटेड वन हो रहे हैं. ठीक है. सो अब उनका लिविंग स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है ना. देर इज अ डिफरेंस इन एग्रीकल्चर इकॉनमी एंड मार्केट ओरिएंटेड इकॉनमी ना. एग्रीकल्चर में थिंग्स are revolving around only agriculture, while in market economy lot more things are there na. Not only, it's not only about agriculture. Okay. So traditionally जैसे ही उनका लिव करने का तरीका चेंज हुआ, उनका लिविंग स्ट्रक्चर चेंज हुआ, वैसे ही उनका सोसाइटल स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ. कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो प्लेज इट पार्ट्स. कॉन्फ्लिक्ट के वजह से भी जेंडर रिलेशंस शेप होते हैं. कैसे? ऑल्दो मेट्रीलोकल एंड पेट्रीलोकल सोसाइटीज आर इक्वली वॉर लाइक. मतलब ऐसा कुछ नहीं कि इसमें ज़्यादा वॉर होने की संभावना है या उसमें नहीं. दे आर ऑल बोथ आर इक्वली वॉर लाइक, सेज एंथ्रोपोलॉजिस्ट कैरोल एम्बर ऑफ एल यूनिवर्सिटी. इंटरनल स्ट्राइफ, इंटरनल मतलब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट as opposed to war against an external enemy prods society towards पेट्रीलोकैलिटी. मतलब अगर किसी सोसाइटी में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है ना, तो सोसाइटी टेंड्स टू बी पेट्रीलोकल. मतलब उसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है दैट दे विल टेंड टुवर्ड्स पेट्रीलोकैलिटी. मतलब बिकॉज वॉरिंग क्लैंस मतलब आपस के जो फैमिलीज होते हैं ना, है ना, उनको बोलते हैं. प्रेफर टू कीप देयर सन्स क्लोज. ऑब्वियस सी बात है, चूँकि अगेन फिर वही वॉर का रिलेशन आ गया ना. मतलब नॉट एग्जैक्टली वॉर बट कॉन्फ्लिक्ट, है ना. तो अगर देर आर conflict among families, so if there is some conflict, and we generally, there is a natural tendency to associate conflict with men, and that is why those society used to keep their sons close. So internal conflicts भी वजह होते हैं why some societies tends to be patrilocal. Okay. Meanwhile, evidence is accumulating that women fought, hunted, and acted as samanas in the distant past. Meanwhile, एविडेंस ऐसे भी अब एक्यूमुलेट हो रहे हैं दैट इन डिस्टेंट पास्ट वुमेन ऑल्सो फाउट, है ना. मतलब वुमेन, इट वॉज नॉट ओनली द मेन हु वेयर फाइटिंग एंड हंटिंग एंड ऑल. नहीं, ऐसा नहीं था. वुमेन वेयर ऑल्सो फाउट, वुमेन ऑल्सो फाउट, हंटेड एंड एक्टेड समानाज. मतलब समानाज मतलब जिनको कि सोसाइटी में एक हायर स्टेटस
दे रखा होता है, उनको समानाज बोलते हैं कि नहीं, दे आर द प्रोटेक्टर, है ना। तो वुमेन को भी कभी ना कभी इन डिस्टेंट पास्ट ये उपाधि दी गई होगी, है ना। नो रोल और पोजीशन हैज़ बीन वॉर्ड टू देम ऑलवेज। कोई ऐसा रोल और पोजीशन नहीं था जो कि उन्हें हमेशा उनके लिए बंद ही था, ऐसा नहीं था। एंड दो फीमेल डिसीजन मेकर्स में हैव बीन रेयर, है ना, ऐसा था कि फीमेल डिसीजन मेकर्स रेयर रहे हों, दे हैव नॉट बीन अपसेट, है ना। बट ऐसा नहीं था कि कभी था ही नहीं, है ना। न्यू एंशियंट डीएनए फाइंडिंग्स फ्रॉम ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन शो दैट देयर वेर एटलीस्ट पॉकेट्स मतलब कहीं कहीं पे ऑफ मैट्रिलिनियलिटी थ्रू आउट ब्रिटेन, है ना, थ्रू आउट ब्रिटेन when Celtic tribes dominated the island in the Iron Age. When Celtic tribes dominated, जब आयरन एज में सेल्टिक ट्राइब्स था, वहाँ पे मैट्रिलिनियलिटी रही होगी, है ना। Combined with archaeological evidence for female warriors and Roman descriptions of female tribal chiefs, it looks as if Celtic women could wield hard as well as soft power. तो अभी तक हम तो ये देख रहे थे कि it was men who were treated as if they only could wield hard power, बट ऐसा नहीं है। एंशियंट डीएनए फाइंडिंग्स हैं फ्रॉम सेल्टिक ट्राइब्स आयरन एज ब्रिटेन, फ्रॉम ब्रिटेन आयरन एज, जहाँ पे कि सेल्टिक वुमेन कुड wield हार्ड, मतलब दे वेर फाइटिंग हंटिंग एंड एज वेल एज सॉफ्ट पावर, मतलब दे वेर इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन मेकिंग, है ना। तो हार्ड पावर मीन्स दे वेर फाइटिंग, you know, in the forefront, and soft power means they were influencing the decision making process. Okay, so the passage first of all refutes the idea of Marxist theory that there was a switch like transition from matriarchy to patriarchy. क्यों? क्योंकि एंथ्रोपोलॉजिस्ट बिलीव दैट डाइवर्सिटी रही है ह्यूमन सोसाइटी में। ऐसा नहीं रहा है कि मतलब सिर्फ मैट्रियार्की थी या सिर्फ पैट्रियार्की थी। मार्क्सिस्ट आइडिया क्या था कि अंटिल एग्रीकल्चर द सोसाइटीज वेयर इगैलिटेरियन, मतलब काइंड ऑफ इक्वल, बट जैसे ही एग्रीकल्चर आया, वेल्थ एक्यूमुलेशन हुआ, एंड मेन got the opportunity to first shape the wealth के norms, because they were the ones that were involved in warfare, and उस समय war के through ही चीज़ें generally decided होती थी, ठीक है। and then again we got to know about the alternative theory which kind of contest मार्क्सिस्ट theory, है ना, कि नहीं ऐसा नहीं था। 5000 साल पहले तक भी यूरोप में वुमेन सेंटर्ड सोसाइटीज़ रही हैं, ठीक है। एंड देन वी टॉक अबाउट मैट्रिलिनियल एंड मैट्रिलोकल सोसाइटीज़, है ना, कि उसमें मैटरनल साइड में दे हैड हायर इन्फ्लुएंस एंड स्टेटस एंड ऑल, बट दे स्टिल डिड नॉट इन्जॉय डिसीजन मेकिंग पावर, वो अभी भी मेन के पास था, ठीक है। एंड अगेन जो एंशियंट डीएनए आइसोटोप्स हैं उनके थ्रू हम पावर स्ट्रक्चर को अच्छे से नहीं समझ सकते, तो अगेन देयर इज अ लिमिटेशन इन ऑल दोज अंडरस्टैंडिंग्स, ओके। एंड देन वी द पैसेज सेज दैट कि मे बी मार्क्सिस्ट आइडिया वॉज राइट कि हाँ पैट्रिलिनियल मतलब एसोसिएटिंग वेल्थ विद पैट्रिलिनियल सोसाइटीज़, बट अदर फैक्टर्स एज वेल shaped gender relation structures, like क्या कि how society makes a living, okay. The second is conflict, okay. So there are other factors as well at play, सिर्फ एक फैक्टर नहीं है। So kind of again we are not entirely refuting the Marxist theory, but we are saying कि that was not only the case, there were other factors as well at play. And again, and then we at the end we got to know about the evidences that कि नहीं ऐसा नहीं था कि वुमेन को कभी
पूरे इंटायर हिस्ट्री में उनको डिसीजन मेकिंग पावर, हार्ड पावर मिला ही नहीं, ऐसा नहीं था. देयर आर फ्यूअर इंस्टेंसेस, बट they had at some point of time in history both hard power as well as soft power. Okay, so this is all in the passage. So let's move towards the questions. Which of the following statements, if true, so that's the first part, which of the following statements, if true, would most seriously weaken the author's argument that, so स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए एंड देन इट शुड वीकन द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट. और किस आर्ग्यूमेंट को वीकन करना है? डैट प्री हिस्टोरिक जेंडर रिलेशंस कैन नॉट बी सिंपली एक्सप्लेन्ड बाय अ लीनियर ट्रांजिशन फ्रॉम मैट्रियार्की टू पैट्रियार्की. फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन स्टेम कि व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट. द आर्ग्यूमेंट इज दैट द ऑथर प्रेजेंट्स, है ना, ऑथर का काइंड ऑफ ये मेन आर्ग्यूमेंट है कि जो प्री हिस्टोरिक जेंडर रिलेशंस हैं उनको आप सिंपली एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि दैट इट वाज अ लीनियर ट्रांजिशन फ्रॉम मैट्रियार्की टू पैट्रियार्की, है ना. द ऑथर, दिस इज द ऑथर्स स्टैंड एंड वी हैव टू वीकन दिस. इट मीन्स we have to present an argument in the favor that actually में ह्यूमन सोसाइटी ट्रांजिशनड फ्रॉम अ लीनियर, मतलब इन लीनियर नेचर फ्रॉम मैट्रियार्की टू पैट्रियार्की. ओके, सो द फर्स्ट ऑप्शन सेज recent archaeological surveys reveal that some societies exhibiting matrilineal inheritance before the spread of agriculture consistently transition to patrilocal systems once accumulation of wealth began, है ना. सो अभी के जो आर्कियोलॉजिकल सर्वेज हैं वो क्या कह रहे हैं कि सम सोसाइटीज़ जिनमें मैट्रिलिनियल इनहेरिटेंस था बिफोर द स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर, ओके, कंसिस्टेंटली ट्रांजिशन टू पैट्रिलोकल सिस्टम्स. अब वी कैन थिंक कि हाँ यही तो बात हो रही थी ना पैसेज में, दैट कि एग्रीकल्चर आया एंड सोसाइटी शिफ्टेड फ्रॉम मैट्रिलिनियल साइड टू पैट्रिलिनियल साइड. सो it may be the answer, but so let's stay with this and let's read the other options. Okay, historical records of many ancient emperors suggest that the emergence of agriculture coincided with increasing wealth inequality and the prominence of male dominated elites in several early civilizations. अब यहाँ पे बात हो रही है एंशियंट एम्परर्स के रिकॉर्ड्स की, है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज नो टॉक अबाउट साइंटिफिक एविडेंस, ठीक है. एंशियंट एम्परर्स के रिकॉर्ड्स को क्या हम उतना ट्रस्ट वर्दी मान सकते हैं? दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन. द सेकेंड थिंग, इमर्जेंस ऑफ एग्रीकल्चर कोइंसाइडेड विथ इंक्रीजिंग वेल्थ इनइक्वालिटी एंड प्रोमिनेंस ऑफ मेल डोमिनेटेड एलिट्स. तो ठीक है, एग्रीकल्चर के साथ वेल्थ इनइक्वालिटी आई एंड मेल का डोमिनेशन आया, बट देर इज ओनली द ऑप्शन ओनली टॉक्स अबाउट कोई इंसिडेंस, है ना. देर इज नो टॉक अबाउट कि कोई शिफ्ट हुआ था, है ना. देर इज अ डिफरेंस बिटवीन शिफ्ट एंड को इंसिडेंस. द ऑप्शन डज नॉट टॉक अबाउट एनी शिफ्ट. एंड सेकेंड, एंशियंट एम्परर्स के रिकॉर्ड्स वो तो मे बी दे वो खुद लिख रहे होंगे. सो आर दे इनफ ट्रस्ट वर्दी? अगेन वी डोंट नो. सो दिस ऑप्शन कंपेयर टू द फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट एज कन्विंसिंग एज द फर्स्ट वन. ओके, सो वी कैन एलिमिनेट दिस. Reassessments of ancient DNA and isotopes, okay, reassessment means they are again reassessed, reveal that current methods underestimate the women's agency. Okay, so B might be underestimating women's agency, okay, leading to a possible overstatement of diversity in prehistoric gender power relations. So it wants to state that कि हम लोग वुमेन का जो
पावर डायनेमिक्स था, we might be underestimating that. Okay, but again, this does not means, or this does not wants to state that there was a linear transition from matriarchy to patriarchy. It is talking about something else, है ना. Women uh, leading to a possible overstatement of diversity in prehistoric gender power relations. Again, it हो सकता ओवर स्टेटमेंट हो, बट वी आर नॉट श्योर ना. वी आर ओनली क्वेश्चनिंग द मेथडोलॉजी, है ना. वी कैन वी दिस ऑप्शन डज नॉट कन्विंसिंगली से कि देर वॉज अ लीनियर ट्रांजिशन फ्रॉम मेट्रियार्की टू पैट्रियार्की. ओके, so again it is not as strong as option A. Recent archaeological surveys indicate that, okay, across multiple prehistoric regions, ठीक है, across multiple prehistoric regions, inheritance rules and societal authority shifted in a broadly similar pattern towards patrilineality following agriculture intensification. So मतलब this option seems perfect. Why? Because अक्रॉस मल्टीपल प्री हिस्टोरिक रीजन्स, मतलब अक्रॉस रीजन्स की बात हो रही है. इनहेरिटेंस रूल्स एंड सोसाइटल अथॉरिटी शिफ्टेड इन अ सिमिलर पैटर्न टुवर्ड्स पैट्रिलिनियलिटी फॉलोइंग एग्रीकल्चरल इंटेंसिफिकेशन. सो एग्रीकल्चर के बाद वो सारा कुछ shifted towards patrilineality. So this option directly, confronts the author's argument, in a very, very direct manner. And so option B and C are straight rejects. Among option A and D, which is better? Now we have to compare. So in the first option, it says some societies exhibiting matrilineal inheritance transition to patrilocal system. In option D, it says across multiple prehistoric regions shifted in a similar pattern towards patrilineality. तो फर्स्ट ऑप्शन में सिर्फ सम सोसाइटीज की बात हो रही है. डी ऑप्शन इज मोर ब्रॉड, है ना, कि सब जगह ही ऐसा हुआ था. एंड अगेन कंसिस्टेंटली ट्रांजिशन टू पैट्रिलोकल सिस्टम, एंड इसमें पैट्रिलिनियलिटी की बात हो रही है. इफ वी अंडरस्टैंड, patrilineality is more convincing in the sense that patrilocal is only limited to कि लोगों का साथ रहना ऑफ पैटर्नल साइड, बट पैट्रिलिनियलिटी मीन्स कि लोग साथ तो रह रहे हैं और वेल्थ का इनहेरिटेंस भी पैटर्नल साइड से ही हो रहा है. ठीक है, सो पैट्रिलिनियलिटी इज काइंड ऑफ द सुपर सेट ऑफ पैट्रिलोकल सोसाइटी, है ना. सो अगेन D is more broad than A, and D is more directly confronting the main, the argument presented by the author. So out of A and D, we should go with option D. Okay. Which of the following sets of words best serve as keywords to the passage? So we have to select those options जिसमें कि जो की आइडियाज़ है पैसेज के वो मेंशन हो जाने चाहिए. ठीक है, सो लेट्स सी द ऑप्शंस. मैट्रियार्की, ठीक है, इट मेक्स सेंस. एग्रीकल्चर, इज एग्रीकल्चर द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज? मे और मे बी नॉट. इनहेरिटेंस, किनशिप, पावर. ओके, इनहेरिटेंस की बात हुई है. किनशिप यानी मतलब ब्लड रिलेशन को हम किनशिप बोलते हैं. तो ऑफकोर्स ये जो पैट्रिलिनियलिटी है और मैट्रिलिनियलिटी है, इट इज़ अबाउट ब्लड रिलेशन ना. सो अगेन सीम्स फाइन, बट लेट्स रीड द अदर ऑप्शंस. जेंडर रिलेशंस, द ऑथर सॉरी द पैसेज का मेन सब्जेक्ट ही है जेंडर रिलेशन एंड इट्स डायनेमिक्स. सो परफेक्ट. डाइवर्सिटी, ऑफ कोर्स मार्क्सिस्ट थियोरी को रिफ्यूट करके यही बताया गया ना कि इट वॉज द सोसाइटीज़ वेयर ऑलवेज इन डाइवर्सिटी. ऐसा नहीं था कि कोई एक स्विच हुआ था. पावर, किनशिप एंड प्री हिस्ट्री. प्री हिस्ट्री इज अबाउट ओनली अबाउट द टाइम. So if we have to select out of option A and B,
which is more convincing? B seems more convincing because बी में जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, जो कोर आर्ग्यूमेंट्स है पैसेज के, उसको ज़्यादा कवर मिला है ना, जेंडर रिलेशंस, डाइवर्सिटी, पावर एंड किनशिप. सो ए आउट ऑफ ए एंड बी, ए डज नॉट seem as convincing as B. What is the option C? Marxist theory, okay, seems fine. Archaeology seems fine. Matrilineality seems fine. इन सब के बारे में बात हुई है. Warfare, was warfare the core theme or argument in the passage? No. So C is straight reject. मतलब out of B and C, we have to go with B. And elites, again, redundant term. Gender relations, diversity seems fine. Archaeology seems fine. Power and kinship. So out of all the options, A and C, C तो straight reject है ना, because warfare and elites are not the main themes of the passage. A में agriculture is again not the main theme. Out of B and D, what should we select? If we look closely, there are only a difference of word between B and D: prehistory and archaeology. So prehistory is only about the time, ठीक है, but archaeology is the structure on which all the evidences, all the studies are based. आर्कियोलॉजी के बेसिस पे ही तो हम किसी आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट और रिफ्यूट कर रहे हैं ना. सो आउट ऑफ, if we have to select the core theme or core concept of the passage, so archaeology is more inherent to the nature of the passage than prehistory. Prehistory is just it is mentioning about time. So out of B and D, D is a better option. Okay, so the answer has to be D. It can be inferred from the passage that the author is not likely to support the view. Author किस view को support नहीं करेगा. Okay, so women's authority in prehistory could exist in forms that were informal. Of course, in the passage, yes, here we talk that if the female consort of a male ruler influenced his interests through patronage and back channels and his own policy, was he any less powerful than him? So there is a mention that there might women's history in authority were informal, may have been informal. और अगेन जब हम अगले पैसेज में बात कर रहे होते हैं, यहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि उनको हायर स्टेटस एंड इन्फ्लुएंस तो था, बट अगेन दे वर नॉट प्राइमरली इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग, बट दे हैड सम अमाउंट ऑफ पावर. उनके पास इनफॉर्मल इन्फ्लुएंस तो था ही, मे बी फॉर्मल इन्फ्लुएंस नहीं था, बट दे हैड इनफॉर्मल इन्फ्लुएंस. ओके, सो that were informal and therefore difficult to detect through material evidences alone. Exactly यही बात हुई है in the last part of the second passage, है ना. So A can be inferred. The spread of agriculture made gender relations more uniform across societies. The spread of agriculture, okay, made gender relations more uniform across societies. क्या ऐसी बात हुई थी पैसेज में कि एग्रीकल्चर के वजह से जेंडर रिलेशंस और ज़्यादा यूनिफॉर्म हो गया अक्रॉस सोसाइटीज़? ऐसी तो बात नहीं हुई थी. हाँ, मार्क्सिस्ट थियरी सेज कि पहले मैट्रियार्की थी, फिर पैट्रियार्की आया, बट कोर आर्गुमेंट तो पैसेज का यही है ना कि देयर वाज डाइवर्सिटी. ऐसा नहीं था कि एग्रीकल्चर की इन्वेंशन के बाद सोसाइटीज़ बिकम यूनिफॉर्म, है ना. सो अगेन यूनिफॉर्मिटी की बात तो कहीं नहीं हुई है पैसेज में. सो बी के साथ तो ऑथर कैन नॉट अग्री. ओके, इवन इफ सम लोकल डिफरेंसेस कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन फैमिली. सो अगेन पार्ट ए ही ऑप्शन को गलत कर दे रहा है. ओके, एक्सप्लेनेशंस ऑफ प्री हिस्टोरिक
Gender relations should remain open to revision as new DNA evidence may emerge to refine existing theories. Again, mm, author is open to revision because he says कि लाइक यहाँ पे हाँ कि जो मैटर ऑफ पावर इट इज़ अ मैटर ऑफ डिबेट है ना. पीपल रिसर्चर्स आर नॉट श्योर है ना, क्योंकि उनके पास अभी इनफ एविडेंसेस नहीं है. And author in all the passages is kind of forward looking. He is open to evidences, so he will be open to revision कि if better evidences appear जिससे कि हम पावर स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं, we can get to know more, then we should be refining these existing theories. So uh, so the author will agree that we should remain open to revision as DNA evidences may emerge to refine existing theories. Okay, so it is not directly inferable, but if we understand the core theme of the passage, then author is forward looking in a in a very scientific manner. Okay, so he is going to agree with this sentence. By discussing the iron age Britain, the passage implies that matrilineal societal authority may have been more widespread in prehistory than previously assumed. जो लास्ट पार्ट है ऑफ द इंटायर पैसेज, वहाँ पे यही बात हुई है कि जो आयरन एज ब्रिटेन था वहाँ पे मैट्रिलिनियल सोसाइटीज़ के पास हार्ड पावर भी था, मतलब एंड सॉफ्ट पावर भी था. ठीक है, and may have been more widespread, and on the basis of that we can say कि हाँ शायद ऐसे इंस्टेंसेस और हो सकते हैं, है ना, in history. So in general this is not a very good inference because you cannot on the basis of one instance you can say कि it is widespread, but again the option uses the word may. It is not stating conclusively कि नहीं ऐसा ही था. So out of B and D if we have to select, तो we can still to some extent agree कि हाँ D हो सकता है, but B is outrightly wrong ना, because यूनिफॉर्मिटी की तो बात कहीं आई ही नहीं. ऐसा कहीं पे बात ही नहीं हुआ है कि एग्रीकल्चर के बाद जेंडर रिलेशंस बिकेम यूनिफॉर्म. सो आउट ऑफ बी एंड डी definitely B is more wrong, so author will not agree with the option B, so the answer is B. Okay, which of the following most accurately captures the author's writing style and tone in the passage? We have to look for the style as well as tone. ठीक है, सो कंटेक्चुअल एंड रिविजनिस्ट. कॉन्टेक्चुअल तो हम कह सकते हैं क्योंकि ऑथर इज in his every argument he is contextualizing. He is not saying or putting up anything. He is giving proper evidences and all. But is he a revisionist मतलब कि he is kind of throwing away a theory and putting up a new theory. But author is not doing any such thing. He is avoiding putting any new theory. He is just he just analytical in nature. He is trying to dissect कि actual जो सोसाइटी रहा है उसका प्रोग्रेस कैसा रहा है. सो ही इज़ नॉट आउटराइट रिविजनिस्ट कि एक थ्योरी गलत है एंड हेयर इज द न्यू थ्योरी. सो ही इज़ नॉट रिविजनिस्ट इन हिज नेचर. Critical and restrained. Of course, the author is critical. He is critically analyzing all the theories. And restrained. Restrained means he is kind of, if you look, he first of all says that Marxist theory may not have been, right, and he puts forward the other theories. Okay, so he is kind of restrained in the sense that he is saying that one theory is not right, but he still accepts some of its things, and simultaneously he tries to dissect other theories and
and he again um, keep things open for future deliberations as well. So he is kind of restrained in a scientific manner. Okay, so it seems a good option. Let's read the other options. Polemic and skeptical. Polemic is harshly critical. Polemic means harshly critical. The author is not harshly critical about any theory. He is critically analyzing, but he is not harshly outrightly rejecting any theory कि नहीं ये तो गलत ही था, ऐसा नहीं है. So option C is wrong. Synthetic and optimistic. Of course, he is synthetic means he is trying to integrate different perspectives or theory into one. Of course, he is doing that, but is he optimistic or is he? So again, option A and C are wrong. Out of B and D, what should we select? So he is critical, of course. He's synthetic, of course. Is he restrained or optimistic? That's the question, and that will decide which is the correct option. Optimistic means he's kind of, in a way, hopeful about the future, but he does not talk about the future and stuffs. He is only putting forward some theories, and he's trying to dissect them. Ki what was the actual thing. So सो यहाँ पे कोई ऑप्टिमिज्म की बात नहीं है. ही जस्ट एनालाइजिंग इन अ वेरी मेथोडिकल, इन अ वेरी साइंटिफिक, इन अ वेरी रिस्ट्रेन्ड मैनर. वो जब मार्क्सिस्ट थियरी को भी he is refuting, he is still restrained, he still accepts some of its things. He is not outrightly rejecting नहीं कि मार्क्सिस्ट थियरी गलत है. तो he even scientifically he is doing it in a very skeptical, very restrained manner. He is not very कुछ, ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट फ्यूचर एंड कि फ्यूचर में ऐसा होगा. ही इज़ नॉट वेरी सो ऑप्टिमिस्टिक. सीम्स be too much to to put on his shoulders, which he is not talking about. So out of B and D, I think B is a better option. So this was all we had from this passage. Thank you.